Assalamualaikum and welcome to GamePlanPK's YouTube channel. I'm Anila Khawaja and I am the CEO of GamePlanPK. Our sports marketing players management company has been running for the last 2 years now, and we thought as everyone else is doing it, why don't we also start our own GamePlanPK YouTube channels. First of all, I'd like to welcome you all to our new Game Plan team. And they're going to be working with us now for the next period and on this YouTube channel as well. And we have some very talented people with us. So my first person I'm going to introduce you to is the very talented Ahmer Najeeb. He is multi-talented. What can I say? He's a radio and TV presenter. He's a cricket commentator. He's an analyst. And he's one of Pakistan's finest mimic artists. So Ahmer Najeeb, welcome on board and welcome to GamePlanPK's YouTube channel. Thank you so much, Anila. Aapne mujhe welcome ka. I am really happy to become the part of GamePlanPK in such an brilliant initiative and brilliant platform. So it's an honor for me to be the part of GamePlanPK. Welcome, Ahmer. We're really lucky to have you on board. You know, I'm just someone who is a fan and a lover of sports and just want to see sports sort of like become big in Pakistan again. But for this show, I'm also in need of experts, and I can't call myself an expert. You're an expert on sport, on cricket, as well as many other things. So we really needed a talent like you on board, who's going to help host this show. Thank you, Anila, के आपने viewers को बताया और साथ में मैं भी viewers के लिए add करता चलूं कि गेम प्लान पीके का जो ये प्रोग्राम है जिसका नाम गेम प्लान है, इसका सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि जहां पर हम एथलीट्स मैनेजमेंट कर रहे होंगे, प्लेयर मैनेजमेंट कर रहे होंगे, उनकी फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। दूसरा, जब हम कभी किसी अपने जबरदस्त गेस्ट को इनवाइट करेंगे तो ये जो प्रोग्राम होगा वो किसी भी गेस्ट, चाहे वो कोच है, वो प्लेयर है, वो कोई मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो उसकी प्रोग्रेस के हवाले से होगा, जेन्युइन इश्यूज के ऊपर होगा और वो कंट्रोवर्सीज, फिक्सिंग, खुद से कोई चीज बना देना, ये इसके ऊपर नहीं होगा। और ये सबसे जबरदस्त पॉइंट था जो अनिला ने जब मेरे से डिस्कस किया, जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि बेसिकली जो फ्रेम ऑफ माइंड लेके अनिला ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, जो सबसे इंस्पिरेशन था मेरे लिए। सो अब जरा मैं माइक लेता हूँ, अनिला से अपने तरफ लेके आता हूँ, जरा हम इनसे पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सो चूंकि इनका ब्रॉटअप सारा आप बहुत से लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, उनके लिए पता है कि इंग्लैंड में हुआ है। सो अनिला, हाउ टफ फॉर यू कि आप पाकिस्तान मूव हुई और आपके लिए पाकिस्तान में काम करना, क्योंकि आप बिल्कुल दो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, इंग्लैंड और फिर पाकिस्तान में आना। सो ये कितना टफ था आपके लिए मूवमेंट आपकी? Yeah, it's one of the toughest things I've ever done in my life. But it has been the most incredible journey of my life as well. I wouldn't want it any other way, and I would not change it. So I have no regrets of coming here. It's actually opened my eyes and it's made me more aware of how, you know, my own people, what they go through, their grievances. I met kids that were just running around, but they had smiles on their faces. I mean, it's an incredible nation. So that kind of opened my eyes. I've been living in London for all my life. I've been born and brought up and educated, so I've seen a very different world. And I've been smothered in a very Pakistani home. So I'm the youngest girl, and so I've just been, you know, I'm smothered in cotton wool. So I'm very protected. Yeah, here's my question. Here's my question from you, Anila. From starting your career in Pakistan, just like a political worker, and from that journey towards the sports, so क्या वो ऐसी चीज थी कि आज जिसने आपको इंस्पायर किया आपके करियर में, कि आपने साथ में सोचा कि मुझे अब स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आना है, यहाँ पे भी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो खड़ा करना है? I got introduced to the sports world, and that was through the ex-PCB chairman Shahryar Khan and his wife is a very dear friend of mine,
And they also opened my eyes to the sports world and what cricket was all about. I went to my first cricket match when I was in Pakistan. It was amazing. And this was probably in 2006. उस वक्त जब international teams आ रहे थे. उसके बाद जब बंद हुआ, then things changed. And that's why during that period, I was part of the whole political movement. And then in 2015, when Zimbabwe came back to Pakistan to play in Pakistan, it was like that hashtag cricket comes home. I became part of that movement. Anila, यहीं से I just want to carry a point from here from this discussion. So सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने गेम प्लान को स्टार्ट कर दिया. डेफिनेटली एक टफ जर्नी होती है, स्पेशली पाकिस्तान में एक फीमेल के लिए आके स्टार्ट करना, इंग्लैंड से आके. सो अभी गेम प्लान के प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन से एथलीट्स हैं, किस स्पोर्ट से हैं, और कैसे आप इंस्पायर हुई इन एथलीट्स से, डिफरेंट इनकी जो खिदमत थी पाकिस्तान के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन्होंने जीत रखे थे, बड़े नाम थे ये. Yeah, so I started first with the cricket, of course, and उस वक्त जब मैं inspire हुई थी from the Baburs and the Hassan Alis and the Shatabs and Imad Waseems, all these kids who had these big dreams and this talent and were part of the national team and carrying the star with them. So मैंने उनको देखना और फिर उनकी live सुन के फिर मुझे समझ आया कि उनकी बहुत tough careers होते हैं, that we need to do a lot more for our athletes and the talent. And then that's when it opened out to not just cricket, but all the other sports. And so that's when, even though she's also an ex-cricketer, but that's when I met Marina Iqbal. And she was just this incredible person, and we will have her as a guest, and you will listen to her story of how we first met. And she just got in touch with us through GamePlan's email. And then we had our first meeting in Lahore where I met her for the first time. And we were there for like 3 hours. And that was it. She joined GamePlan. I loved her. I saw her talent. I thought she was an incredible female who needs to be given this platform so that, she can actually, the talent that she has, that she actually gets exposure and people realize what talent she has. So it was from Marina. Then I sort of got introduced to Ahmed Shahzad, and then Ahmed became part of the GamePlan team. Then we had the squash champion, Farhan Mehboob, and I think you had a role to play as well, because I think you got him in touch with me, and he got in touch with me, and it was, again, a sensational story. Again, a super talented squash player who's been playing since the age of 7 or what have you. And again, 17 to 18 years. 17 to 18 years. And I didn't know of him. And when I told people about him, nobody knew of him. So how come these people who have been winning these trophies in tournaments for Pakistan and wearing the star for the last 10 to 15 years are not recognized? So I wanted him to come on board and become part of GamePlan, and we wanted to have a platform for these people. Now, what GamePlan is about creating a brand ambassador. If you know that in Pakistan, aapke kitne brand ambassadors hai? The only sportsman who is the biggest brand in this country is Imran Khan, is the Prime Minister Imran Khan. After that, I'm sorry to say, we never have produced brands. We've got amazing, talented people like Wasim Akram, Shoaib Akhtar, and loads of other guys, but they never became that sort of like, those ambassadors. अभी इसी डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं. अब आपने अपने एक बड़े प्लेयर जो आपकी टीम का हिस्सा हैं, सरफराज अहमद, जो गेम प्लान का हिस्सा हैं, जो इस वक्त आई थिंक इससे पहले कि अनीला कुछ सरफराज के बारे में बताएं. प्लेयर्स का करियर आता है कि करियर में वो कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी हल्का परफॉर्म करते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट जर्नी इन एनी स्पोर्ट्स, बट सरफराज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सोल. बहुत खूबसूरत इंसान है सरफराज अहमद, बहुत ही अच्छा इंसान है, इज अ वेरी वेरी काइंड पर्सन. सो मैं चाहता हूं कि सरफराज का कुछ अनीला बताएं कि उनको कैसे आपने अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और उनके साथ जर्नी कैसी रही है. So the most beautiful thing about this story is that I
could never, like, we were only a year old. And मैं तो कभी किसी के पास जा रही भी नहीं थी because I thought, my God, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं कि मैं इतने बड़े players के पास जाऊँ. मैंने कभी सरफराज का सोचा ही नहीं. I mean, he is our captain for all 3 formats at that time. And I was like, I was so scared of even sort of like, you know, interacting with him because he was such a big thing. Yeah, just out of the blue, he during PSL last year, was it last year? Yeah. And he kind of said to me that he wanted to have a meeting. And I was like, what? And so he was like, yeah, I'd just like to know कि आप लोग क्या करते हो and what your plans are and blah, blah, blah. So I had a meeting with him and it was just amazing. I was blown away because he wanted to join GamePlan. And I couldn't have asked for anything better. He's the most incredible, such a humble human being, one of the nicest guys I have met. And he has been a fantastic brand. But again, we never, like, what did we do for him? After the Champions Trophy tournament, oh my God, the win was massive. But what did we do for him? Nothing. And so when he joined us, I was like, wow, this is heaven. Anila, carry the discussion. And I just want to ask about another athlete and another sports person. Umar Amin is a very good player. I just remember him. He's one of the finest batting talent currently in Pakistan. He's from my hometown, Rawalpindi. And a बहुत अच्छा player, Umar Amin. So, इतना Umar Amin को कैसे आपने hire किया है और उसके साथ कैसे जर्नी रही है? जरा Umar Amin के वाले से भी बताएं. So Umar Amin का सिर्फ अभी उसका 1 साल हुआ हमारे साथ, and again he was he's one of those forgotten souls. I think जो ज़्यादा नहीं बात करते ना, जो pushy नहीं होते, जो अपने आप को अपना PR नहीं बनाते, ये लोग they get forgotten. And लेकिन हमें याद आना चाहिए कि they have actually got talent. They're super talented human beings. He was part of the national team. His batting style is just amazing. But the thing is that he's a forgotten soul because he's another very, very humble human being. And his talent is superb. So we were desperate to have, again, he would make a superb brand ambassador for Pakistan. And they become inspirations for our youth. That's what it is. Our youth need to be inspired. So हम बात करते हैं कुछ रोहिल नजीर की, और मैं रोहिल नजीर की कुछ स्टोरी आपके साथ भी बताना चाहता हूँ. अनिला तो उस पर बात करेंगी. So PSL की जर्नी चल रही थी और रोहिल नजीर जो अभी हमारा 2020 का PSL हुआ उसमें रोहिल नजीर मौजूद थे. मेरे बैकग्राउंड पे रोहिल बैठे हुए थे, मैं कुछ जर्नलिस्ट के साथ बैठा था और उसको पता था कि मुझे मुल्तान सुल्तान पिक करेंगे. अली तरीन जो थे वो उसके साथ ही बैठे हुए थे. So जब ड्राफ्टिंग में मुल्तान सुल्तान के लिए रोहिल को पिक किया तो दैट बॉय इज वेरी हैप्पी एंड इज क्लैपिंग विद एवरीवन एंड we and some other my colleagues are there. They congratulated him on his another journey, another landmark, and he's such a good guy जो under 19 क्रिकेट से जितना consistent player है, अपनी कैप्टनसी में उसने बहुत से अचीवमेंट लिए तो एक एक स्टेप ऊपर जाता रहा. So वो लड़का जो यंगस्टर है, वो जो एक राइजिंग यंगस्टर, नॉर्मली लोग इतना आज अब नोटिस नहीं करते थे यंगस्टर को, उस वक्त अनीला ने रोहेल को पिक किया. सो रोहेल को कब आपने डिसाइड किया कि मुझे उसको पिक करना है? और वैसे तो बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि रोहेल इज वन ऑफ द वेरी नाइस, बहुत यंग है लेकिन बहुत फोकस्ड है अपनी क्रिकेट पे. Yeah, another blessing. So another blessing for GamePlan. So basically, I was thinking, देखो, we need to also now focus on the newcomers, जो हम उनको थोड़ा सा groom कर सकते हैं, because it's better to catch them young. Catch them young, and then we can groom them and give them a good sort of solid sort of platform to walk on. So the fact is that Rahel was someone who I had. Lots of people had told me about, and I was desperate. I didn't know how I was going to meet him. So it just so happens that the PSL draft just so happened he was picked by Multan, and then I already had him in my mind. And us waqt to phir main, you know, I did my job and I just went and spoke to him and just asked him outright. And seriously, these kids are well grounded, and वो बहुत डरा हुआ था. And वो तो कह रहा था कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं करता हूँ, and you know I'm not managed by anybody, and I'm being very
careful, which is a fantastic thing for me to hear, because what happens is a lot of people, you know, take these kids and then they're exploited and what have you. So it was really good to hear that. And so फिर मुझे रोहल के साथ थोड़ा सा time लगा. I told him to do some background checks with me. I told him to get in touch with a number of people who knew me and how GamePlan works. And so he did that. And he is one of the sweetest kids around. He really wants to do all he can to become that #1 for Pakistan in the future. See, that's what we want. Now, we don't just, So he wasn't Anila, interested. He wasn't interested, which I hear all the time. He wasn't interested in making a quick bucks, which is what everybody else wants. Everybody wants to make money and wants to become part of leagues and फिर वहाँ से फिर पैसे बनाए. He wants to become #1 for Pakistan. And that's all I wanted to hear. And that's what GamePlan is about. We want people that want to make it big for Pakistan. Right. So I just want to ask about the Huzaifa, the tennis guy. So Huzaifa, आपने टेनिस की वर्ल्ड से भी लोगों को, लड़के को पिक किया. पाकिस्तान में टेनिस का इतना स्कोप नहीं है. अगर हम नाम की बात करेंगे तो आपको एक बड़ा नाम इस्लामुल हक का याद आता है, चले और नाम अकील खान का नाम आता है. लेकिन एक आपने एक ऐसे स्पोर्ट्स, एक यंग बॉय को पिक किया जो पाकिस्तान में इतना फेमस नहीं है. वर्ल्ड वाइज तो ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है. हम टेनिस की बात करते हैं. सो हुजैफा को कैसे आपने देखा, कितना टैलेंटेड ये लड़का है, कितना पोटेंशियल है, और आपने कैसे डिसाइड किया कि हुजैफा को भी हमने गेम प्लान के प्लेटफॉर्म पे लाना है? So this is another amazing young talented kid, and again youth. So it was very interesting. I was at the National Games in Peshawar. The National Games were being held in Peshawar for the first time last year, and so I was attending that, and I was going to watch a lot of the games that were going on, and it was very interesting because it was his father that came and spoke to me. And he said that I know that you run a company called GamePlan, and please, I want to introduce my son to you. And his name is Huzaifa, and he is someone who is, I've been working on him for years, and I want him to become Pakistan's #1 tennis player. Then when I got to know that वो Davis Cup के लिए वो खेल रहा है for the first time, I was just astounded. I was like, wow, this is really amazing. So इसके ऊपर फिर I have actually not met Huzaifa. I've met his father a number of times, and I'm in touch with his father, and he is now training in Florida at the moment. He'll be back maybe next month, but however much he can train abroad, they try and put as much जो भी उनके पास पैसे होते हैं वो उसमें डालते हैं so that he can get training from abroad, and then they bring him back. But obviously they want him to become Pakistan's #1, and so that was another young talent that we have on board, which you'll see more of, inshallah. राइट. सो हम एक और डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं. सो अनिला, क्या आपने सोचा है कि आपको पता है पाकिस्तान में प्लेयर्स के मसाइल होते हैं, उनको अपने करियर के बारे में नहीं पता होता. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स होते हैं इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको किसी खास स्पोर्ट्स में आ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता मैंने सर्वाइव कैसे करना है इस लेवल के ऊपर. जब आपका फॉर एग्जांपल क्रिकेट में अगर आपको फेम भी मिल जाता है तो उस फेम को मैनेज करके अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग कैसे करना है, उनकी मेंटल ग्रूमिंग, उनकी बाकी ब्रांड्स के साथ एक्टिविटी, उनको ब्रांड बनाना, उनकी बाकी एक्टिविटीज को देखना. सो गेम प्लान के क्या वो पॉइंट्स है, क्या वो फ्यूचर प्लान्स हैं कि वो किस तरह से इन एथलीट्स, इन स्पोर्ट्स पर्सन के फ्यूचर को रीशेप करेगा, उनको एक रिस्पेक्टेबल जगह पे छोड़ेगा कि जब अपने करियर में इवन वो फिनिश भी करेंगे, वो अपने करियर को एंड भी करेंगे, सो वो एक ऐसी पोजीशन में खड़े होंगे कि वो स्टिल ब्रांड रहेंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर सकेंगे, वो लोग भूलेंगे नहीं उन्हें. So exactly, the whole thing is कि लोग सिर्फ short term सोचते हैं. लोग सोच रहे हैं कि अच्छा आज मैं खेल रहा हूँ, पैसे आ रहे, it's fine, but nobody actually thinks about the future. What happens when your career is over? What happens if you kind of like, you know, आप बस छोटी You're out of team. Out of team, where do you go from there? They need to have a plan. They all need to have a plan, and not a short-term plan. कि पहले आपने कहाँ जाना है,
आपने उसके बाद क्या-क्या आप कर सकते हो. I mean, you know, you think about a lot of the things that branch out for them. And coaching careers, commentating careers, इस तरह की चीजें, like for example, Marina Iqbal, she was playing for the national team for 7 years, and उसके बाद now she is like one of the first female Pakistani commentators, and that's fantastic. So आगे सोचना है कि फिर इसके बाद आपने कहाँ जाना है. So we want to be able to help and guide and provide a platform for them so that उनके पास आगे future plans भी हो. Anila, quickly, I have to move on क्योंकि हमारा शो का टाइम थोड़ा सा आखिर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने पॉइंट्स को इंक्लूड कर लें जो हमारे रह गए हैं. सो अब तक जो गेम प्लान की जर्नी है उसमें क्या मेजर इवेंट्स जो है वो गेम प्लान ने जो है वो करवाए हैं, उनको लीड किया है, और किस तरह से गेम प्लान इनको ऑर्गेनाइज किया, और वो कौन से इवेंट थे? Yeah, so when we first started, we started this thing called the Super League, and we were blessed to have Shan Shoop Noodles, who got involved with Yummy. us. And yeah, so unhone dekho, this is one brand whom I say thank you so much for trusting us and putting money into the sports world. We created this incredible 15-day tournament, and it was in Moin Khan Academy. It was done to such a professional standard, and we had 40 teams of students. So they were school students from schools, and they were from the top different schools of Karachi, and this happened in Karachi. And 8 of them were female schools. So it was one of the finest things that we have produced with Shan Shoop. ये बहुत बड़ी चीज थी डेफिनेटली. एक ग्रास रूट लेवल पर अगर आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दें और उस तरह के इतने लोग उसको कवर कर रहे हो तो डेफिनेटली बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और उसके बाद आप लोगों ने 2019 वर्ल्ड कप के अराउंड भी काफी सारे इवेंट्स किए थे, तो हम उसके वाले से भी जरा जानना चाहते हैं. हाँ जी, हमने किया था. We did a number of things that were going on, and we were working with Bank Alpha and stuff. उन्होंने भी invest किया था. It was fantastic. And basically we were doing we had Wasim Akram on board, and he was doing all the post analysis of after every game. And we also had Marina Iqbal and Ali Gulpir, we were doing short interviews with huge stars, Wasim Akram and Shoaib Akhtar and Saeed Ajmal and all the big guys. Right. So viewers, for your information, so हमने आज के अभी एपिसोड में हमने कोशिश की है कि हम आपको बताएं कि गेम प्लान पीके को कौन लोग चला रहे हैं, उसने किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, क्या शुरू में मुश्किल आए, किस तरह से एथलीट्स को अप्रोच किया या एथलीट्स उनके पास लेकर आए, क्या उनका प्लान था, क्या सोच, क्या विजन लेकर वो इस गेम प्लान में आए, क्या क्या मेजर इवेंट्स अब तक गेम प्लान ने कवर किए हैं, और आगे का क्या गेम प्लान का स्कोप है. सो अभी हम अपने शो को एंडिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं. सो अभी आप एक चीज मैं आपको जरूर बताता चलूं कि गेम प्लान अब अपने सीरीज ऑफ एपिसोड्स आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर लेकर आएगा, जिसमें आप हमारे इसी तरह के जबरदस्त किस्म के गेस्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, और टाइम टू टाइम अनिला जो है वो भी हमारे साथ बीच में होंगी, और भी बहुत सारे हमारे पास जबरदस्त गेस्ट लाइन है. बताऊंगा नहीं, आपने सिर्फ क्यूरियोसिटी आपके अंदर रखनी है कि कौन से वो गेस्ट होंगे. सो अनिला, एंडिंग लाइन कुछ बात कहना चाहें आप, ताकि हम शो को बिल्कुल फिर एंड करें. Yeah, just want to say that we don't want it to be, I know that everyone's got their YouTube channels out and stuff. We don't want it to be too sort of boring for everybody, and, it's not going to be the same old thing. We just want it to be more of a chilled kind of atmosphere where the guests can just come on board and just show this other side of them that people are not aware of. Their talent, they're huge stars. It'd be great just to see this other side so that everyone knows that they're just human beings. So welcome on board our YouTube channel. So viewers,
एंडिंग नोट करते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गेम प्लान पीके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पॉजिटिव न्यूज लेकर देगा, प्लेयर्स और एथलीट मैनेजमेंट जो है वो उसकी इंप्रूवमेंट के ऊपर लेकर आएगा। हमारे पास स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज होंगी, हम उनसे बात करेंगे, ना सिर्फ उनकी स्पोर्ट्स के वाले से बात करेंगे बल्कि उनके करियर में उनकी लाइफ कैसे गुजरती है, वो आम दिनों में एंजॉय कैसे करते हैं। एक ऐसा स्पोर्ट्स शो होगा जो उनके थोड़ा लाइटर नोट पे भी होगा, थोड़ा फन भी होगा, थोड़ा स्पोर्ट्स भी होगा। और बिल्कुल भी जो गेम प्लान पीके का जो यूट्यूब चैनल है उस पे वो चीप नहीं होगा कि क्या कह दिया उस खिलाड़ी ने, ये कह दिया उस खिलाड़ी ने, इस तरह कह दिया, ये खबर क्लिक करें, ऐसा कोई काम नहीं होगा गेम प्लान पीके के ऊपर। और आपको हमेशा एक जबरदस्त ऑथेंटिक न्यूज और क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। सो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, इसके बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता चले। और आगे गेम प्लान पीके इन फ्यूचर अपने फैंस को भी इंक्लूड करेगा, उनके क्वेश्चंस जो अपने सुपरस्टार्स या अपने गेस्ट से कहना चाहते हैं, तो ये हमारा कोर पार्ट होगा। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, गेम प्लान को देखते रहिए। टिल द नेक्स्ट एपिसोड आई वांट टू से अल्लाह हाफिज, बाय बाय।